Hello, dear students. Today's session we'll be talking about sources of corporate finance. It's the second chapter of your 12th curriculum. You can refer page number 14 of your textbooks for a better understanding. Finance. What is finance? As we all know, finance is also called as capital. Capital is something which is the basic need of a business. This need can be for starting the business, running the business, expanding, promoting, growing, and whatsoever. In short, for making money, the company needs money. This money the company can arrange from two basic categories or two basic means, either from owned capital or from borrowed capital. That means, for better understanding, we are categorizing the sources of corporate finance into two broad categories: owned capital and borrowed capital. When the company raises money with the help of owners or shareholders, we call it as owned capital. The shareholders here purchases the shares of the company and they supply the necessary capital. Another form of or another source of capital is borrowed capital. As the name suggests, borrowed means here the company borrows money from an investor. When I say borrow, that means it is a sort of a loan. And when it is a loan, it means there is a certain time restriction when the company has to return this money to the investors back. So, in short, owned capital is a type of an ownership capital, and borrowed capital is a type of a capital in which there is no ownership rights, but there will be creditorship status over here. Owned capital, for a better understanding, can be further subcategorized into two subparts: external sources and internal sources. When the money is brought into the business from external ways, but this money will have ownership rights, we call this source as shares. When the same money is arranged internally within the company, is called as retained earnings. In the coming slides, we'll be talking about the external sources, that is shares first, and then we will be moving to internal source, that is retained earnings. Shares. As we all know, the total capital of the company is divided into small parts. Each part is called a share. General people or general public like you and me can purchase such shares of the company and be the owners of the company at a very, very small investment. Such people who invest in the company by purchasing shares are called as the shareholders of the company. The first question which we will be learning about here is, what are shares and what are the features of shares? Here we'll be talking about the general features of shares. First feature of share talks about meaning, smallest unit in the total capital of the company. The second feature talks about distinctive number. Now please understand this concept nicely. When the shares are in physical form, each share is given a specific serial number for identification by the company. This serial number, which is given to the shares, and each and every particular share is mentioned in the physical share certificate. A very common example that you get roll numbers in the college. These roll numbers are given to you by the college authorities for better identification and for managing the records properly. Similar manner, the company makes use of this distinctive number to keep record of the shares which they have issued
what particular number of share or which particular number of share is issued to which individual helps in keeping the track record of this entire share. Let's understand this with a small example. For example, there are 3 shareholders of a company where A is the first shareholder, B the second shareholder, and C is the third shareholder. A, B and C individually holds 100 shares. A, being the first shareholder of the company, will start having shares from number 1 till number 100. Once A is allotted 100 shares, B comes into the picture where B will be the next second shareholder, and so he will be getting distinctive number shares from 101 to the next lot, that is 200. Similarly, Mr. C, being the third shareholder, will get the third lot of 100 shares starting from distinctive number 201 to 300. In short, if the company wants to know how many shares they have issued till date, they can. The next one is the evidence of title. The next one is evidence of title. If I tell someone that I am the owner of the shares of Reliance Company, the question which I could be asked is, what proof you have? For such questions, my answer would be the share certificate. Yes, it is a document of title of ownership of shares which contains each and every detail about my ownership in the company. That means the number of shares, the distinctive number of shares, and so on. The next feature talks about value. Class, please note that each share has a value which is expressed in terms of money. Whenever we'll be talking about shares, 3 values generally comes into the picture. Face value, a value which is written on the share certificate or the face of the share, that is the share certificate. Issue value, value or the price at which the company sells its shares. Third is the market value or the value which is determined by demand and supply forces. So 3 values: face value, issue value, and market value. The next feature talks about ownership. Since shares are external source of owned capital, it has ownership rights. So all the investors or all the shareholders who invest in the company, they will be getting ownership rights in return. Coming to the next set of features, rights. A person who invests in the company by purchasing shares, what rights is he entitled to? First right, he gets the right to receive dividend. Second right, he has the right to inspect the statutory books of the company. He has the right to attend all the shareholders' meetings, and the most important right, he has the right to vote in such meetings and show his presence. This way, he can be a part of the decision maker. He can participate in the management decisions. He can interfere in the management decisions. So indeed, the most important right. Next feature talks about income. Well, it's human tendency. We all expect some return for the investment which we have made. Although shares are considered as ownership capital, so you can't expect to get a lot of income, but whenever you will be getting income, will be called as dividend. The next set of feature. Till now we have learned about the features of shares. Now we'll be talking about the types of shares.
Shares are broadly categorized into two broad parts, equity and preference. Equity shares, also known as ordinary shares, these are those shares which do not enjoy preference. They do not enjoy priority over preference shareholders. अब सवाल उठता है priority in which terms? So the priority in terms of dividend payment and priority in terms of repayment of capital at the time of winding up. What does that mean? कंपनी को जब भी डिविडेंड देना होगा तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेट भरेगी. अगर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कंपनी डिविडेंड में पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, और अगर बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेट भरा जाएगा. इफ़ आई टॉक अबाउट रीपेमेंट, दैट मीन्स when the company is at a position of shutting down, winding up or closing, तब कंपनी सोचती है कि जिन लोगों से पैसा लिया है उनको वापस किया जाए, दैट मीन्स रीपेमेंट. इस मौके पर भी कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पैसा देगी. अगर बच जाता है, दैट मीन्स कंपल्शन नहीं है, अगर बच जाता है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ देने का सोचेगी. दैट मीन्स two things you need to understand. Number one, there is no commitment to equity shareholders to pay dividend. First commitment is given to preference shares. Number two, after paying everything to the creditors, to preference shareholders, if anything is left, then equity shareholders will get anything, otherwise no commitment for that also. The features of equity shares. Moving on to the first set of features, permanent capital. Equity shares से जो पैसा receive होता है, the amount which is received from equity shares is not refunded by the company during its lifetime. यानी कंपनी जब तक ज़िंदा है, कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने की चिंता नहीं करनी है. जब कंपनी वाइंड अप होती है तब भी अगर कंपनी के पास में पैसा बचता है तो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने का सोचना है, अदरवाइज़ वहाँ भी कोई कमिटमेंट नहीं है. इसीलिए हमने लिखा है दैट इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग. The next feature talks about fluctuating dividend, where fluctuating means changing. Class, please note that the dividend which is given to equity shares is directly connected to profits of the company. That means when there is more profit, the company will get more dividend. When there is less profit, the company will give less dividend. And when there is no profit, no dividend will be given to the equity shareholders. That means the dividend which is given to equity shareholders is uncertain and irregular. That means there is no guarantee, no commitment and no fixed return given to the equity shareholders. Talking about the rights of equity shares, as we have already talked, they have the right to vote in the meetings, they have the right to inspect the books of accounts, they have the right to share the profit, that means they have the right to get dividend, and most important right, they can definitely transfer their shares, but as per the provision laid down in articles of association. The next feature talks about no preferential right. Yes, equity shareholders को preference shares के मुकाबले कोई भी preference नहीं है, ना dividend payment में और ना ही winding up में. They are the last to be paid. Talking about controlling power. Class, note, the power to vote is the main power.
जिसके पास वोटिंग पावर है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है. Equity shareholders has the power to vote. They can, with this power, they can attend all the meetings and they can participate in the management. The most important is that they can elect their representatives who are called as directors. These representatives work for the company on behalf of the shareholders. So, if the shareholders feel that these directors are not working for the benefit of the company, they have full power to remove and change these directors. That's a wonderful power. That's the reason they are called as the real masters and controllers. A famous saying goes, with power comes risk. Yes, equity shareholders also are attached to risk. What risk they have? They have the risk to absorb the losses of the company. They can't ask for money to the company, they can't ask for dividend to the company when the company is in bad terms, when the company is in a loss situation. They are the ones who have trusted the company, they have given the money to the company even when they knew that the dividend which they will be getting may be fluctuating or is not committed. Since they have taken this risk, they are absorbing the shock during losses, and still they are voting and participating in the management. Hence, they are called as the real shock absorbers, controllers, and masters of the company. Talking about the next set of features, residual claimants, where residual means bacha kucha. Equity shareholders, being the real owners of the company, they are the last one to get anything, or in fact they are the last one to claim anything. Whatever income the company gets, the company first does all the basic expenses, pays taxes, fills the stomach of preference shares through giving preferential dividend, and if anything is left, they do give it to the equity shareholders. That means equity shareholders are the last to claim on the earnings of the company. That's why we call them as residual claimants. Now, a very common question which generally students ask me is कि इक्विटी शेयर्स को ना तो डिविडेंड का प्रायोरिटी है, ना तो रीपेमेंट में कुछ कमिटमेंट है, तो क्या वो कंपनी के असेट्स पर चार्ज नहीं कर सकते या कंपनी के असेट्स पे हमला नहीं कर सकते फॉर टेकिंग आउट देयर मनी? सो द क्वेश्चन का आंसर है बिग नो. Why no? Because equity shares do not create any charge on the assets of the company, or in short, they are unsecured. At the time of purchasing only, they were told that they will be getting only and only ownership rights, the right to vote, and the right to receive dividend. In case the company fails to pay them the dividend or fails to pay them the amount at time of winding, they have no right to create any charge on the assets of the company, and they can't ask the money back from the company. Class, if you remember, in the classroom sessions, I have talked about two perks which the equity shareholders get. Perks means benefits. The first benefit with equity shareholder gets is bonus issue. Bonus means a gift. और जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसके पैसे नहीं लेता. यह गिफ्ट कौन किसको दे रहा है? तो यहाँ पर गिफ्ट कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रही है. सिंस वो गिफ्ट है इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. गिफ्ट देने के बाद द नेक्स्ट perk which arises is right issue. Now understand, when a company needs more funds or more money for expansion, the company raises more shares, the company issues more share, यानी न्यू शेयर्स इशू होते हैं. जब कंपनी ये न्यू शेयर्स इशू करती है
तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला प्रायोरिटी देती है, पहला ऑप्शन देती है टू परचेज न्यूली ऑफर्ड शेयर्स. प्लीज़ नो दैट दिस इज़ एन ऑप्शन एंड नॉट अ कंपल्शन. सो अगर 100 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ये ऑफ़र करते हैं कि आप न्यू शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं या नहीं, अगर वो शेयर्स ख़रीद लेते हैं और जो बैलेंस शेयर्स बच जाते हैं उनको हम पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं. बोनस शेयर इज़ नॉट वॉज अ गिफ्ट. राइट शेयर इज़ नॉट अ गिफ्ट, एंड हियर you give a right to purchase new shares, maybe at a price lesser than the price which will be available to the general public. So, two perks which are given to equity shareholders is bonus and right issue. Talking about face value, equity shares की face value generally low होती है. Can be in multiples of ₹1 or 100. अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज़. वाई? क्योंकि मार्केट वैल्यू जनरली लिंक होती है डिमांड से. डिमांड जनरली लिंक होता है कंपनी के डिविडेंड से. तो अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है तो डिमांड बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट का प्राइस यानी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा. बट अगर किसी रीज़न से कंपनी डिविडेंड कम दे पाती है, सो मार्केट में बात फैलती है कि कंपनी ने डिविडेंड कम दिया, कंपनी का गुडविल कम होता है, कंपनी का डिमांड कम होता है, और इस रीज़न से कंपनी का मार्केट वैल्यू भी कम हो सकता है. So here we end up with the features of equity shares. Time to learn about preference shares. How do I define preference shares? They are those shares which have priority over equity shares in terms of dividend payment and in terms of repayment. Features of preference shares. The first feature talks about preference for dividend. Yes, they have preference over equity shares in terms of dividend payment. Second feature talks about preference for repayment. Yes, they do have preference over equity shares in respect to return of capital when the company is being winding up or liquidating. Fixed return. Preference shares get dividend at fixed rate of return. This rate of dividend. This dividend is predetermined or disclosed earlier itself to the shareholders at the time of issue, which is mentioned in the share certificate. Two things to note over here is that preference shareholders को जो dividend मिलता है वो fixed भी होता है और वो guaranteed भी होता है. Moving to the next set, that is nature of capital. प्रेफरेंस शेयर्स से जो पैसा मिलता है दैट इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ परमानेंट कैपिटल. वाई? बिकॉज दे कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. येस, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है जिसमें अगर वो लाइफ टाइम में अपना पैसा कंपनी से वापस चाहते हैं तो उन्हें हक है कंपनी से अपना पैसा वापस मांगने का. यानी अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है तो वो बेचिंत होकर ये नहीं सोच सकती कि जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस नहीं देना है. दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स को जहाँ दो फीचर्स पहले से थे, पहला फीचर था डिविडेंड पेमेंट, दूसरा फीचर था रीपेमेंट पे प्रायोरिटी, तो अब एक थर्ड फीचर ऐड हो गया है. वो फीचर क्या है कि दे आर रिडीम्ड और पेड इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ मार्केट वैल्यू. Market value of preference shares does not fluctuate much because उनका rate of dividend ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, डिमांड ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है और इसलिए मार्केट वैल्यू भी मोर और लेस सेम ही रहता है. वोटिंग राइट्स की मैं बात करूं तो
क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स है? तो आंसर है बिग नो, बट दे कैन वोट ऑन मैटर्स इफ़ इट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। यानी उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं, बट जनरल मैटर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जनरल डिसीशंस ऑफ द कंपनी में दे कैन नॉट से एनीथिंग। द नेक्स्ट फीचर, रिस्क। Preference shares are at the less or the low risk. Why? Because उनको डिविडेंड भी गारंटीड है, उनको रीपेमेंट पे भी बाइंडिंग पे भी पैसा मिलेगा, और बीच में अगर वो पैसा चाहते हैं तो उनको वो भी मिलेगा। People who are generally cautious invest in preference shares. Talking about face value, the face value of preference shares is higher than equity shares. जहाँ equity shares की value हमने देखी है 1 रुपीज़ या 10 रुपीज़, वहाँ पर preference shares की value होती है 100 रुपीज़, क्योंकि जितने ज़्यादा features amount उतना ज़्यादा। If I talk about perks, तो जैसे इक्विटी शेयर्स को राइट और बोनस इशू के पर्क्स हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये दोनों पर्क्स नहीं मिलते हैं। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू any such perks. Once now we have learned about the features of equity and preference. So in your textbooks you can also see the difference between equity shares and preference shares. So the next 2 slides we'll talk about the difference between the two, where we'll be comparing the features one by one but at a little fast pace. Equity shares meaning and preference shares meaning, the definitions you can write. Rate of dividend in equity shares is fluctuating, whereas it is fixed in preference shares. Equity shareholders, they enjoy voting rights, however preference shareholders do not enjoy voting rights. If I talk about return of capital, equity capital cannot be returned during the lifetime of the company, whereas for preference shares, as we have talked, that a new feature has been added where they can ask their money back before the winding up, that is during the lifetime. Nature of capital, equity shares में जो invest करता है उसको रिस्क ही रिस्क है, वो खतरों का खिलाड़ी है, इसलिए उस कैपिटल को हम कहते हैं रिस्क कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ हाउएवर एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर अ मोर सेफर कैपिटल टू इन्वेस्ट इन। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, द वंस हु आर risk bearer investors, risk taking, खतरों के खिलाड़ी, they invest in equity shares. However, the investors who are cautious, they invest in preference shares. Face value of equity share is generally low, 1 या 10 rupees. Face value of preference shares is generally high, 100 or so. Right and bonus issue, सिर्फ equity shareholders entitled होते हैं, preference shareholders are not eligible for such perks. Capital appreciation means market value. Market value of equity shares, as हमने देखा, generally fluctuate भी होता है ज़्यादा और वो ज़्यादा increase होता है, जबकि market value of preference shares ज़्यादा fluctuate नहीं होता है और more or less same रहता है. If we talk about risk, equity shareholders में risk ज़्यादा है because fluctuation in dividend ज़्यादा है और गारंटी ऑफ कैपिटल नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कम है, रिटर्न डिविडेंड फिक्स्ड है और वाइंडिंग अप में प्रेफरेंशियल आपको पैसा वापस मिलेगा. इसकी नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द सब टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इक्विटी शेयर्स के 2 सब टाइप्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के 8 सब टाइप्स है. हर कैटेगरी को 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सो इस तरीके से आपको 8 सब टाइप्स प्रेफरेंस शेयर्स के मिलेंगे. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, वन इज़ विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स and the another one is with differential voting rights. So voting rights, if voting rights are in proportion to the shareholdings, the general, the common voting rights, we call that these type of shares are called as normal voting right equity shares. अगर differential voting rights है तो उनको normal voting rights के साथ साथ में कुछ additional varying rights रहते हैं, maybe for dividend, voting, etc. So
Two types of equity shares: normal voting rights and differential. Differential means something different, something more, something extra. Moving to the types of preference shares, as you can see, there are 4 broad categories, and each category has 2 subtypes: cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable, irredeemable. This we have already done in the classroom sessions. Still, I will go through it in quickly. Now, first set of preference shares, that is cumulative and non-cumulative. Cumulate होना यानी इकट्ठा होना, जमा होना. यहाँ क्या जमा होता है? यहाँ जमा होता है अनपेड डिविडेंड. डिविडेंड अनपेड कौन सा है? डिविडेंड विच इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड इज़ कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड. यानी कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको डिविडेंड देंगे, बट इस साल नहीं देंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर देंगे. सो ऐसा डिविडेंड जो है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. कब तक कैरी फॉरवर्ड होता है? जब तक वो इकट्ठा होता रहता है और जब तक उसके सारे अरियर्स यानी पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं होता है. सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज in which, now please see the screen so that we can club these words and form a definition. So cumulative preference shares are those in which the unpaid dividend gets carried forward to the next accounting year, full stop. Such dividend gets accumulated over years. कब तक? Until all the arrears are paid off. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो उसमें डिविडेंड अगर पे नहीं हुआ उसी साल तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो यानी डिविडेंड इफ़ नॉट पेड इन दैट ईयर इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. The right to claim dividend will lapse if the company does not make profit in that particular year, and if dividend is not paid in that year, that dividend is lost forever. अरे ये तो dividend, ये तो preference shareholders के साथ नाइंसाफ़ी हो चुकी है, but ऐसा होता है. Next, participating preference shares. Participate in what? Please understand, यहाँ participate in management नहीं होता है, यहाँ पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स होता है. अब सरप्लस प्रॉफिट यानी कि क्या? प्रॉफिट विच इज़ रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड आफ्टर ऑल द बेसिक एक्सपेंसेस आर डन. बेसिक एक्सपेंसेस यानी जितना इनकम हुआ उसमें से सारे बेसिक खर्चे करके माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके माइनस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो आपको ये वाला डिविडेंड तो मिलेगा. दिस इज़ कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिविडेंड. इसके साथ साथ इसमें भी पार्टिसिपेट करने का हिस्सा यानी हक आपको मिलेगा. दैट मीन्स besides getting preferential dividend, you get an additional right to participate in the surplus profits of the company. But अगर आपने non participating shares preference shares लिए हैं तो आपको जो आपका basic right है preferential dividend वो तो मिलेगा. बट अगर कंपनी को एक्स्ट्रा सरप्लस बचता भी है तो आपको उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी. टू बी वेरी क्लियर, पार्टिसिपेटिंग में आपको बेसिक प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो आपका हक है वो प्लस सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है. बट नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंशियल डिविडेंड लेकर ही खुश रहना है. द नेक्स्ट थर्ड सेट ऑफ types of preference shares talks about convertible and non-convertible. So please see the spellings here because maximum time students do a error of writing it convertible, TABLE, but it's TIBLE. Convert किस में होता है? Preference shares are converted into equity shares.
This is the right which is given to convertible preference shares, that they can convert their shares into equity shares. सवाल होता है कब, तो ये जब कंपनी और इन्वेस्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड विच इज़ डिसाइडेड बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर, व्हेन एट द टाइम ऑफ इशू ओनली, यानी पहले ही ये सब पहली चीज़ें क्लियर कर ली जाती है। नॉन कन्वर्टेबल में आपको ऐसा चेंज करने का कोई हक नहीं है और आपकी ज़िंदगी भर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनकर रहेंगे। आप कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर हैं। मूविंग टू द फोर्थ सेट, दैट इज़ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल यानी आपने जो पैसा कंपनी को दिया है, अगर आप शेयर होल्डर हैं और अगर आपने कंपनी को पैसा दिया है तो वो पैसा वापस मिलने का हक। तो redeemable preference shares are those shares which can be redeemed after certain fixed period of time. That means if the preference shareholder wants, they can ask their money back from the company before winding and during lifetime. But irredeemable preference shares में आपको लाइफ टाइम में पैसा मांगने का हक नहीं है। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। वो कब उसका पैसा वापस मिलेगा, जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी। दैट मीन्स रिडीमेबल में आपको वाइंड अप होने तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट इररिडीमेबल में आपको तब तक पैसों का वेट करना है जब तक कंपनी वाइंड अप होती। Class, till now we have seen about the external sources of owned capital. Now we'll be talking about the internal sources of owned capital, that is ownership capital, retained earnings. As the name tells you, retained means holding or keeping back. Earnings means the income of the company. Every company earns income called as earnings. For example, our parents also earn a specific amount of income. That income is called as earnings. With this earnings, the parents do all the basic expenses like paying the electricity bill, paying the maids, filling the grocery, paying your school fees, giving you expenses, आपका डेली खर्चा या मोबाइल बिल्स, ये सब करने के बाद, और इन फैक्ट द अवेयर पेरेंट्स ये सब करने के पहले दे सेव सम पोर्शन ऑफ इट, दे सेव सम पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स for the future, for uncertainties. Same manner, the concept applies to a company also. Every company earns some of the other income which is called as earnings. From this earnings, the company does all the necessary expenses as we have already seen in the example. Part of this income is also distributed as dividend among the shareholders. So whatever income the company earns, the company pays it to the salary, it undergoes production process, pays it at taxes, pays it to the preference shareholders at dividend, pays it to equity shareholders as dividend. But what if the company pays the entire amount to the shareholders and does not keep anything with it for its future? In case of uncertainties, the company is in a position where the company again has to beg money from others. So a wise company does not distribute the entire earnings in the form of dividend. What does it do? Such type of companies retain or holds some part of its earnings in the form of reserve funds for its future. This portion which the company is retaining in the form of reserve fund is called as retained earnings. The retained earnings year after year keeps on accumulating and it becomes a big amount for the company. This amount the company can use for its growth and expansion.
So in simple words, how do I define retained earnings? It's a part of profit which is not distributed to shareholders as dividend but is retained by the company or is held by the company in the form of reserve funds. Here, I would like to add a simple point to you that the accumulated earnings year after year can be used by the company in its self-financing. This is the cheapest, the simplest, and the easiest method of financing. Because why simple? Because you don't have to undergo any legal formalities for taking a loan. आपका खुद का पैसा है, आप यूज़ कर सकते हैं. Why cheap? आपको किसी को इसके बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं देना है. So it's a very simple, cheap and easiest way of financing. I'd like to add that this retained earnings which the company is accumulating in the form of reserve funds over years and years, the company can use it. That means the company can put this part of profit back into the business in the form of capital. That means here the nature of profit is getting converted into capital, and so this term is called as capitalization of profit. This is done by issuing bonus shares. Another terminology which is used here is plowing back of profit or self-financing. So in short, by issuing bonus shares free of cost to the existing equity shareholders, out of the retained earnings, the company is converting profit into capital, and so it is called as capitalization of profit. Now, whatever earnings we have and whatever savings we do depends on certain factors or determinants. What are the factors? Let's see for a company. First factor talks about total earnings. अगर हमारी earnings ज़्यादा है तो ये common sense है कि हम save भी ज़्यादा ही करेंगे. Second, taxation policy. The taxation policy of government is something which has no control of on which a company has no control. So if the taxes which are levied on the company are high, the company has no option but to first pay the taxes and then to save. So if high rates of taxes are there, retained earnings would be less. Third determinant talks about dividend policy. Here the board of directors thought or think process is very important. If the directors think that they should follow a conservative dividend policy, that means कंजूस, यानी जहाँ वो ज़्यादा ये फील करते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा ना दें और जितना हो सके हम उतना बचा लें, तो ऐसे केसेस में व्हेन यू आर गिविंग लेस डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स यू कैन सेव मोर. But such type of policies are not fruitful in long term because the shareholders might get unhappy from the company. The fourth determinant is on government control. It's a regulatory body which works on the entire economic system. The rules, policies framed by the government, imposed by the government are something which the company has no control on. So sometimes इस rules and policies को follow करते करते हमारे earnings पे affect हो सकता है, and sometimes it might also affect our retained earnings. So let's see quickly on all the four determinants. Simple earnings ज़्यादा है तो retained earnings ज़्यादा है. Taxes अगर high है तो आप save कम कर पाएंगे. डिविडेंड पॉलिसी में अगर आप कंजूसी वाली डिविडेंड पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा सेव कर पाएंगे. बट अगर वाइस वर्सा आप दिल खुश हैं, आप लोगों को ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप सेव कम कर पाएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स द गवर्नमेंट कंट्रोल. Now with this we have come to the end, or we have finished the owned capital, where external we have learnt about shares and internal we have learnt about yes, I need the answer, we have learnt about retained earnings. Now it's time to move on to the next set, that is borrowed capital.
बोरोड यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने उधार लिया है. Well, it's a normal practice for the company to borrow money from the public or other sources because the company has to expand, and so the company has to explore additional sources of capital. As you can see on the screen, I've mentioned various sources of borrowed capital which we will be learning in this chapter. First one is debentures, deposits, bonds, ADRs, GDRs, and so on. So don't panic, we'll be doing it one by one, and I'm sure by the end of the chapter you will be aware about all such terms which are mentioned on the screen. So let's move on with the first borrowed capital source, that is debentures. First source of borrowed capital which we will be seeing is debentures. In the previous video, the one video which I have shared, I have talked about debentures, but quickly I will be taking you through this. Debentures is derived from a Latin word debere which means to owe, किसी का एहसान. किसने किसका एहसान लिया है यहाँ पर मैं क्विकली लिख कर बता देती हूँ. यहाँ पर कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, यानी कंपनी ने पब्लिक से लोन लेकर एहसान लिया है, एहसान पैसों का. सो डिबेंचर is derived from the Latin word debere which means to owe something. It's an instrument under seal which is evidencing debt. Debt यानी कि loan. So when you give money to the company gives you a debenture certificate in return. So इसलिए यहाँ लिखा है it is an instrument under seal. Under seal means under the common seal of the company. Evidencing debt, that's a proof of loan which is taken by the company from the public. It is a document which is given by the company as evidence of debt to the holder, usually arising out of loan and most commonly secured by debt. This definition you can see in your textbook page number 23. Now, as you can see on the screen, the diagram very clearly explains what is debenture. Debenture is a type of a loan which is taken by the company from the general public. This general public is called as debenture holders. You can see that the company is borrowing money from the public. When this public gives money to the company, the public gets a debenture certificate and evidence in return. So this is how the diagram talks about debenture holders. If I talk about the status, see, we are not learning owned capital sources, we are learning borrowed capital. So यहाँ किसी ने किसी का पैसा उधार लिया है, borrow किया है, यानी कोई यहाँ पर किसी का creditor है. So debenture holders are the creditors of the company and उन्होंने पैसा उधार दिया है with a motive to earn income. Here the motive is not ownership. They are not good people like equity shareholders कि उनको कुछ ना मिले, सिर्फ वोटिंग मिले और वो खुश रहें. They are investors जो थोड़े से लालची हैं, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए. They need income, that too fixed and guaranteed. So here debenture holders are the creditors of the company. As you can see in the diagram, you can see that the company is liable to pay fixed rate of interest to the debenture holders. Class, one thing which I would like to make it very clear to you is I will be drawing the diagram over here so that it makes very clear. See, this is a company and this is debenture holder or public. This debenture holder is giving loan to the company. Now, when someone is giving loan, three things are very clear. There must be specific amount, यानी डिबेंचर होल्डर ने कितने अमाउंट का लोन दिया है.
देयर इज स्पेसिफिक टाइम, यानी डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को कितने टाइम के लिए लोन दिया है, और स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो लोन दिया गया है इस पे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को कितना रिटर्न पे करेगी। सो जब भी लोन पिक्चर में आएगा ये 3 चीज़ें बहुत क्लियर है, सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दिस। नाउ लेट्स फीचर्स, हम क्विकली डिबेंचर्स के फीचर्स पे एक बार नज़र मारते हैं। पहला फीचर है प्रॉमिस। प्रॉमिस कौन किसको दे रहा है, यहाँ पर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस दे रही है। किस चीज़ का प्रॉमिस दे रही है? प्रॉमिस है कि हाँ, जो पैसा डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिया है वो पैसा डिबेंचर होल्डर को कंपनी रिटर्न करेगी, ये कंपनी का प्रॉमिस है। इसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट पे डिसाइड हुआ है वो इंटरेस्ट रेट भी पे करेगी, इसका भी प्रॉमिस है। नंबर 2, फेस वैल्यू। जनरली डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 और 100 के मल्टीपल्स में रहती है, यानी डेफिनेटली इट्स मोर देन इक्विटी शेयर्स। टाइम ऑफ पेमेंट, जैसे हमने अभी देखा कि लोन है तो 3 चीज़ें फिक्स्ड है, अमाउंट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये स्पेसिफाइड ड्यू डेट होता है जो डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा है। इस ड्यू डेट में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी को उधार दिया गया है वो कंपनी को वापस करना होता है डिबेंचर होल्डर को, दैट द प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स रीपेड ऑन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट विच इज़ मेंशन्ड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. The next feature talks about priority of repayment. Yes, debenture holders have priority over whom? Over preference shares and definitely over equity shares. यानी लेनदारों की लाइन में सबसे पहले यहाँ खड़े होंगे डिबेंचर्स, उसके बाद खड़े होंगे प्रेफरेंस शेयर्स और उसके बाद खड़े होंगे इक्विटी शेयर्स। यानी कंपनी पहले किसका पेट भरेगी? यस, डिबेंचर होल्डर्स का, देन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स का। नाउ अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, हु इज़ गिविंग अश्योरेंस टू whom? Here the company is guaranteeing the debenture holders that they will be getting their money, because here one thing which you need to note is that जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट है, वो लॉन्ग टर्म लोन है, मे बी 10 years और सो 10 years के लिए किसी को पैसा देना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो यर द डिबेंचर होल्डर्स नीड्स टू बी अश्योर्ड दैट दे विल get the money on time, they will get the principal on time. So the assurance is given by the company. कैसे assurance दिया जाता है? By writing all the conditions in the debenture certificate. Moving to the next feature, interest. Fixed rate of interest agreed होता है, ये सब decide होता है at the time of issue कि कितना पे किया जाएगा और किस पीरियोडिकली पे किया जाएगा, यानी साल में एक बार दिया जाएगा, हाफ ईयरली दिया जाएगा, और इट वुड बी पेड क्वार्टरली. सो ऑल दीज टर्म्स आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू. इफ़ आई टॉक अबाउट parties to a debenture, I guess a point has been missed in the thing, but then quickly I will just write that point. There are 3 parties to a debenture. The first party is the company. A company, the entity which issues the debenture or which is in need of money. The second entity is the trustee. Now please understand who is a trustee. A company has to appoint a trustee if the company is offering debentures to more than 500 people. 500 से ज़्यादा लोगों को अगर कंपनी डिबेंचर्स ऑफ़र करती है तो कंपनी को अपने बीच में और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना है, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टी. तो ये तीनों मिलकर एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है दैट इट इज़ कॉल्ड एज ट्रस्ट डीड. So the first party is the company who needs money. The second party is a middleman between the company and the debenture holder, and it is responsible for
फॉर टेकिंग केयर ऑफ द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ अन्याय ना हो, कुछ नाइंसाफ़ी ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रस्टीज़ की बनती है. एंड द थर्ड पार्टी, आई विल राइट इट हियर, is the debenture holders. They are the parties who provide the loan to the company, and they get debenture certificate as an evidence. Moving on to the next authority, the authority to issue debentures. So board of directors is the authority to issue debentures. Next, status of debenture holders. As we all know, they have provided loan and they have given credit to the company, so the status they enjoy is of creditor and not of owner. Since they are not the owners, they will not be getting voting rights, so it's written no voting rights. Now the question is that the company is taking money from the debenture holders maybe for 10 years or so what guarantee or what assurance the company gives that okay, I will pay you the amount on time? So the point comes security. Debentures are secured against the assets of the company. I will like to add a point here that हमने shares में देखा था that shares are not secured, especially equity shares. अगर हम वहाँ पर कंपनी कुछ पे नहीं कर सकती है तो कोई शेयर होल्डर को राइट नहीं है कंपनी के असेट्स पर चार्ज करने का. बट अगर डिबेंचर होल्डर्स के केस में इफ़ द कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट और द कंपनी फेल्स टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, डिबेंचर होल्डर्स विल फर्स्ट टॉक टू द ट्रस्टीज एंड द ट्रस्टी विल देन have full right to charge on the assets, take the assets into its custody, auction it off, take out the money and then pay the debenture holders. Who can issue debentures? Well, debentures can be issued by both public and private. Now coming to the last topic of today's session, types of debentures. यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप एक बार देखिए, हमने सेम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे. प्रेफरेंस शेयर्स के भी 4 कैटेगरीज थे. ईच कैटेगरी हैड 2 सब टाइप्स. Debentures also are categorized into 4 broad categories and each category has 2 subtypes. That means very confusing. Equity shares के 2 types, preference shares के 8 types, debentures के भी 8 types. And if you see, आपको दिखेंगे कि ऐसे 2 types हैं जो debentures and preference shares के common हैं. तो वो कौन से 2 types हैं? वो है convertible and redeemable, irredeemable. Don't worry, we'll be talking about it and then आपके सारे doubts clear हो जाएंगे. So let's see the first type, that is secured and unsecured debentures. Secured नाम बताता है those debentures which are secured against the assets of the company, which are secured through trust deed. And यहाँ पर 2 charges होते हैं. something is missing, so प्लीज़ पे अटेंशन. पर्टिकुलर असेट, अगर कोई एक पर्टिकुलर असेट कंपनी दे देती है कि इन केस मैं डिफ़ॉल्ट करती हूँ तो ये असेट को बेचकर आप पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं फिक्स चार्ज. बट ऐसा कोई असेट मेंशन नहीं किया जाता है तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज. यू कैन प्लीज़ रेफ़र योर टेक्स्ट बुक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो ये हो गए सिक्योर डिबेंचर्स जहाँ पर सिक्योरिटी है अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो. Unsecured debentures are those which have no securities, means अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, you don't have anything in your hand, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ट्रस्टीज़ पे के पास रो भी नहीं सकते हैं, बट ये गलत है. And that's the reason such type of debentures have been prohibited by Companies Act 2030. यानी कंपनीज अब unsecured debentures issue नहीं कर सकती है. Moving to second set, registered and bearer debentures. See, now here I would like you to consider the example of a 100 rupee note and a check of rupees 100. A 100 rupee note will be considered as a bearer document. Why bearer document? Because the name of the person to whom it belongs is not mentioned on the 100 rupee note. In case you lose
that note, you cannot claim that that note belonged to you. Whosoever is the holder of the note is the owner. Similar manner, बेरर डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके डिबेंचर सर्टिफिकेट्स पे डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होता है, यानी जैसे 100 रुपये का नोट होता है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट है बेरर वाला। जैसे 100 रुपये का नोट अगर गुम जाता है आप अपना क्लेम नहीं कर सकते, वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट बेरर वाला अगर घूमता है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज योर नेम, योर नंबर, योर डिटेल्स आर नॉट मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड जैसे 100 रुपये का नोट जिसके हाथ में है, फिजिकल पोजेशन जिसके पास है, वही उसका ओनर है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी जिसके हाथ में पोजेशन है वही उसका ओनर है। सो ट्रांसफ़र कैन बी डन बाय मियर डिलीवरी। प्लीज़ नोट योर डिलीवरी वर्ड हैज़ बीन टेक्निकली मिसप्रिंटेड। सो ये हो गया बेरर। बेरर यानी जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, ना ही उसके डिटेल्स कंपनी के डिबेंचर सर्टिफिकेट में या डिबेंचर रजिस्टर में मेंटेन्ड होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड की, सो जैसे अगर हम एक चेक देखें, क्रॉस पेई चेक, सो एज द नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज़ मैंशनड एज ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड विद द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद द कंपनी। ऐसा डिबेंचर अगर घूमता भी है सो डरने की बात नहीं है, बिकॉज यू कैन अगेन आस्क द कंपनी विद अ वैलिड रीज़न कि ये घूम गया है, आप मुझे री इशू कर दीजिए, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। और अगर इस टाइप के डिबेंचर सर्टिफिकेट्स किसी के हाथ भी लगते हैं तो तकलीफ़ की बात नहीं है, क्योंकि जिसका नाम है उस पर लिखा वही उसका ओनर है। बट बेरर डिबेंचर सर्टिफिकेट्स थोड़े रिस्की होते हैं और उनका फिज़िकल पोजेशन ही उसकी ओनरशिप बताती है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स। द नेक्स्ट इज़ द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगेन द चार्ट ऑफ कन्वर्जन इज़, सबसे ऊपर होते हैं सिक्योरिटी वाइज डिबेंचर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर्स। हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स एंड नाउ डिबेंचर्स कैन बी also be converted into equity shares. Please note that debentures will be converted into equity shares always and never to preference shares. So अब अगेन सवाल है कन्वर्जन कब होगा, तो भैया स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। and when is the time decided? At the time of issue and it's mentioned on the debenture certificate. non convertible debentures में आपको कन्वर्जन का कोई राइट नहीं है। And the last set of debenture talks about redeemable and irredeemable. redeem करना यानी जो principal amount है it can be payable at the end of some fixed period which is stated in the debenture सर्टिफिकेट। यानी कि जो स्टैंडर्ड चीज़ है कि आपने अगर 5 साल के लिए लोन दिया है तो 5 साल के बाद में आपको आपका पैसा रीपे हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा। Let's see about irredeemable. Irredeemable में the point says that the money cannot be repaid during the lifetime of the company and it is only paid after liquidation, which is generally not a feature of debentures, because in debenture हमने ये देखा है कि वो principal repay होता है। This is generally a feature of preference shares, but yes, such type of debentures used to be issued where the principal amount was not supposed to be given back to the debenture holders. It was supposed to be given only at the time of liquidation. So such type of debentures are also under the process of getting prohibited for issuing. So here we end up with the session. Hope it was a